Dear student, we are discussing the Victorian poets, and among them we have discussed first poet laureate Alfred Lord Tennyson, then Robert Browning, the most famous poet at that time, and today we are going to discuss the next important poet, Elizabeth Barrett Browning, 1816-1861. She was one of the prominent Victorian poets whose work attained great popularity in England and America. She inspired poets like Edgar Allan Poe, Emily Dickinson. She began writing poetry at an early age. She had written a number of essays and poems by the age of 15. Very interesting. Her first published collection of poems came out in 1826, titled An Essay on Mind with Other Poems. She translated Aeschylus' Prometheus Unbound, 1833-1850. She was an ardent supporter of Emancipation Act, which proposed freedom and abolition of slavery in British colonies, and wrote two poems, The Runaway Slave at Pilgrim's Point and A Curse for a Nation. She wrote a good number of poems contributing to various periodicals, The Seraphim and other poems. 1838 was widely acclaimed. This caught the attention of Robert Browning, who wrote her praising them. They corresponded regularly and eventually married. She wrote prolifically and published poems like The Cry of the Children, 1842, which condemned child labor and the horrific condition of child workers, and helping to bring about child labor reform between the year 1841 and 1844. The two of her most famous pieces were written after she met Browning: Sonnet from the Portuguese and Aurora Leigh, the long blank verse. In spite of producing a large number of verses, only her sonnets are well known now. She continued to write on the poetical issues as well as poems until her death in 1861. Her work confronted contemporary social and political issues. Many of her poems explored the religious aspects. Emily Dickinson admired her poems for their feminism and outspoken activism. As far as the Elizabeth Barrett Browning is concerned, she is wife of Robert Browning. So she was also the most prominent Victorian poets, and as far as her work are concerned, she always tried to do some for the society with the help of her writing, and we have seen she tries her best to emancipate the slavery from British colonies. She also tried to raise her voice and condemn the child labor and horrific condition of child workers, helping to bring about the child labor reform between the year 1841 and 44. So she was one of the most prominent Victorian poet. She inspired the poet like Edgar Allan Poe and Emily Dickinson. Edgar Allan Poe and Emily Dickinson are also very famous poet, and she began writing poetry at an early age. She had written number of essays and poems by the age of 15. तो आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के वाइफ है, और एज फार एज हर कंसर्न्स शी ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. कुठंतरी सामाजिक और पॉलिटिकल यानी कि राजकीय और सामाजिक गतिविधियों के बारे में उन्होंने लिखा, और उसका बहुत ही वी कैन से the contribution to the society is the abolition of, she always tried to raise her voice to abolish the very bad habit of slavery, and Emancipation of Act was proposed, freedom and abolition of slavery in British colonies, and wrote two poems. For that she wrote two poems, The Runaway Slave at Pilgrim's Point and A Curse for Nation. तर ह्या दोन ज्या पोएम आहे, रनवे स्लेव ॲट पिलग्रिम्स पॉईंट अँड कर्स फॉर अ नेशन,
तर या ज्या 2 पोयम आहे काय लिहिल्या गेल्या आहे की इमॅन्सिपेशन ॲक्ट विच प्रपोज द फ्रीडम अँड अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. प्रपोज फ्रीडम अँड अबॉलिश करणे म्हणजे काय, काढून टाकणे. स्लेवरी म्हणजे काय, आपलं हे त्याला गुलामगिरी इन ब्रिटिश कॉलनीज. तुम्हाला थोडक्यात माहिती असेल की ब्रिटिश कॉलनीजमध्ये गुलामाची पद्धत होती आधी, आणि अमेरिकेमध्ये वगैरे हा प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणावर होता. तर त्यांच्या विरोधामध्ये कुठंतरी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आणि कुठंतरी हे देअर शुड बी द ॲक्ट टू इमॅन्सिपेट द स्लेवरी, अबॉलिश द स्लेवरी फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलनीज. आणि त्यासाठी त्यांनी 2 पोयम लिहिल्या. त्या अंडरलाईन करून घ्या तुम्ही किंवा नोटबुकमध्ये लिहू. यू जस्ट राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. रनवे स्लेव एट पिलग्रिम्स पॉइंट एंड कर्स फॉर द नेशन. ये दोन पोएम जो लिखे हैं, जो स्लेवरी अबॉलिश करने के लिए उन्होंने जो युक्तिवाद किए थे, उसके लिए उन्होंने ये 2 पोएम्स लिखे. सो उन्होंने एज द एज ऑफ 15 स्टार्टेड टू राइट पोएम्स. एंड उनके जो पहले कलेक्शन है वो क्या है, एन एसे ऑन माइंड एंड विथ अदर पोएम्स. ये कलेक्शन उनका 1826 में आया था. उसके बाद में उन्होंने ट्रांसलेशन भी किए हैं. उसमें अचिलस प्रोमेथस अनबाउंड 1833-1850, ये भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हमें दिखने को मिलता है. अचिलस प्रोमेथस बाउंड, इनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था इनटू इंग्लिश. शी वाज एन आर्डर सपोर्टर ऑफ इमेंसिपेशन एक्ट. उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे पीरियडिकल्स जो आते हैं उनमें भी उन्होंने ये किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है. द सेराफिम एंड अदर पोएम्स उन्होंने लिखा 1838 में. दिस कॉट अटेंशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड सेराफिम ओनली बिकॉज ऑफ दिस वर्क दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वेर यूनाइटेड, because Seraphim and other poems were greatly acclaimed by the Robert Browning, and Robert Browning wrote to Elizabeth Barrett Browning appreciating her poet, and they regularly tried to contact each other, and ultimately they eventually got married. and ये जो है सेराफिम एंड अदर पोएम्स, इसके वजह से दोनों का मिलन हुआ और मैरिड हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं. She wrote prolifically and published poem like City of the Children. तो ये क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन, ये जो वर्क है वो किसके बारे में लिखा गया था, चाइल्ड लेबर और हॉरिफिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड वर्कर. तो उसको अबॉलिशन करो, चाइल्ड लेबर रिफॉर्म बिल लाओ, इसलिए उन्होंने ये लिखा था द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन. तो ये भी आपको राइट डाउन करना है कि उनके जो महत्वपूर्ण वर्क है उसमें से द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन ये भी एक है जो उन्होंने चाइल्ड लेबर के विरोध में लिखा था, हॉरिफिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वर्कर के विरोध में लिखा था. वो था द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन विच वाज पब्लिश इन 1842. तो आपको ध्यान में रखना है कि उनका एकदम इनिशियल जो वर्क है वो क्या है, एन एसे ऑन माइंड विथ अदर पोएम्स. उन्होंने कौन सा वर्क ट्रांसलेट किया है, अचिलस प्रोमेथस अनबाउंड. उन्होंने जो स्लेवरी के विरोध में जो लिखे तो वो कौन से 2 वर्क है, रनवे स्लेव एट पिलग्रिम्स पॉइंट एंड अ कर्स फॉर द नेशन. एंड उन्होंने जो बहुत ही उनका महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम रहा है वो क्या रहा है, सेराफिम एंड अदर पोएम्स. एंड द चिल्ड्रेन के लिए जो लिखा है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड हॉरिफिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड वर्कर, वो वर्क क्या है, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन विच वाज पब्लिश इन 1842. सो उसके बाद में उन्होंने 2 ऑफ हर मोस्ट फेमस पीसेस वेयर रिटन आफ्टर शी मेड ब्राउनिंग. ब्राउनिंग से मिलने के बाद में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो कलेक्शन है वो क्या है, सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज़ एंड अरोराले. ये 2 महत्वपूर्ण वर्क उन्होंने लिखे आफ्टर मैरिंग विथ रॉबर्ट ब्राउनिंग. एंड इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स, ओनली हर सोनेट्स आर जनरली वेल नोन नाउ. उन्होंने अपने मरते दम तक लिखना चालू था. एंड जनरली वो शी वाज टोटली डेडिकेटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एंड शी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इश्यूज विद द हेल्प ऑफ हर राइटिंग. सो एलिजाबेथ बैरेट के इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि उनके वर्क कौन से हैं, उन्होंने कब वो पब्लिश किए थे. ठीक है. उसके बाद में हम देखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड. He was accomplished both as a poet and a writer of critical essays. Empedocles on Etna, 1852.
and Poems 1853. He was accomplished both as a poet and writer of critical essays. मैथ्यू अर्नल्ड की क्रिटिकल एसेज जो है उन्होंने बहुत सारी क्रिटिकल थेरीज के ऊपर काम किया है. तो उनका जो ही इज़ वेल नोन फॉर एज अ पोएट एज फार एज द क्रिटिकल एसेइस्ट. इम्पेडोक्लस ऑन इटना एंड पोएम्स, ये उनके महत्वपूर्ण वर्क है जो आपको लिख के रखने हैं. इम्पेडोक्लस ऑन इटना एंड पोएम्स established his reputation as a poet. This volume comprised of a poem like सोरब एंड रुस्तुम, स्कॉलर जिप्सी. तो ये आपको पूछे जा सकते हैं कि who wrote the सोरब एंड रुस्तुम एंड स्कॉलर जिप्सी. Who wrote? The Matthew Arnold wrote this most beautiful poem, Sorab and Rustum and Scholar Gypsy. In 1867 he published another volume of poems, New Poems. उनका फर्स्ट वॉल्यूम कौन सा था? Empedocles on Etna and Poems, which were published in 1852 and 1853 respectively. In this volume comprises of the poem सोरब एंड रुस्तुम. उनके इनिशियल वॉल्यूम में कौन से पोएम थे? सोरब एंड रुस्तुम थे और स्कॉलर जिप्सी. ये बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स ही हैज़ रिटन यूर. In 1867 he published another volume of poem. उसका what does it name? New Poems, which comprise the sonnet like Dover Beach. न्यू पोएम्स जो दूसरा उनका पब्लिश वर्क है, तो वो न्यू पोएम्स में कौन से पोएम है? डोवर बीच, थायरसीस, रग्बी चैपेल. दीज आर आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ही हैज़ रिटन यूर. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. तुम्हें ये ध्यान में रखना है यार, लिख के रखना है. उनके ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही फिलोसॉफिकल पोएम्स हमें दिखने को मिलते हैं. थायरसीस, डोवर बीच और रग्बी चैपेल. He also produced many volumes of prose literature between 1861 and 1888. Essay in Criticism, Culture and Anarchy. These are the prose work he has written. Essay in Criticism and Culture and Anarchy. These are also his work, but it is prose work. त्यांचे प्रोज वर्क जर कोणते होते हे तुम्हाला विचारलं तर यू शुड कीप इन माइंड एसे इन क्रिटिसिझम अँड कल्चर अँड अनार्की. हिज मेजर वर्क्स इन क्रिटिसिझम. अर्नाल्ड इज कन्सिडर ॲज अ लिंक बिटवीन द रोमॅन्टिसिझम अँड मॉडर्निझम. पहा, एकदम जर त्यांचे आपण क्रिटिकल वर्क जर बघितले तर वी कॅन कन्सिडर मॅथ्यू अर्नाल्ड ॲज द लिंक बिटवीन द रोमॅन्टिसिझम अँड मॉडर्निझम. एलिमेंट ऑफ रोमॅन्टिसिझम कॅन बी सीन इन द यूज ऑफ सिम्बॉलिक लँडस्केप अँड हिज इमॅजरी, while his pessimism and skepticism had a modernistic perspective. आपल्याला असं दिसते की when we observe the work of Matthew Arnold, we can consider him as a link between the romanticism and modernism. What is the features of romanticism? Generally in romanticism we have the use of symbolic landscape, we have the use of images. Generally they create with the help of the word power. Such type of features we generally find in his work. At the same time we also find the note of pessimism and skepticism, and that is the indication of modernistic perspective. Pessimism म्हणजे काय? निराशावाद. स्केप्टिसिझम म्हणजे काय? की कुठंतरी एक त्याला डाऊटफुल नेचर ज्याला आपण म्हणतो, कुठंतरी निराशावाद आपल्याला ह्यासुद्धा फीचर्स त्यांच्या याच्यात पाहायला मिळते. म्हणून आपण म्हणतो की ही वॉज कन्सिडर्ड as a link between the romanticism and modernism. His prose and verse exhibit high purpose, distinguished style and refined beauty. There is a meditative and restrained quality in poem like Scholar Gypsy, Thyrsis. Arnold felt that poetry should be criticism of life. This is the most important term. What does he says? Arnold felt that poetry should be criticism of life. It means that if we are going to write any poetry, that should be the based on the life, criticism of life. If you see any follies in the society, you must comment on that. You must comment on the criticism, the follies and whatever the bad habits are going on there in the society. It is the work of the poets or any writers to comment on that. We should criticize the life, which we should contemplate on the life and try to express that your opinion with the help of your literature. So that's why he says poetry should not be any expressing the beauties of the nature or expressing the thing beyond the nature, but
as far as we have that obligation to express our thoughts regarding the prevailing situation in the society, that's why he suggests poetry should be the criticism of life. Whatever we observe in the society, we must comment on that. We must express our views about what is going on in the society. That's why he says poetry should be the criticism of life, and that the true happiness was to be found within the person's own heart by keeping out the turmoil of the world. And here also the most important thing he want to suggest, that we can get the true happiness, and that true happiness we can find only within the personal own heart by keeping aside the turmoil of the world. This whole, we observe the whole world, we only find the turmoil, we only find the adversities, we only find the obstacles and a lot of difficulties we generally find in the world. But if we want the true happiness, that can we find only in our own heart. That's why we have to keep aside all the turmoil of the world and try to concentrate on yourself and try to get true happiness in your heart. And then in the poems like Dover Beach and Victorian Problem of Doubt and Faith is explored. It is very beautiful poem, Dover Beach, that I have already suggest you that that particular period is totally governed by the skepticism and loss of faith in God. But as far as we go through the poem Dover Beach, we will come to know that he has expressed his views about the doubt and faith, and that how we should avoid doubt and how should we have faith in the God and all that. He has expressed very gracefully in his poem Dover Beach. So dear student, thank you. The remaining portion we will discuss tomorrow. Okay.